In Muttoncherry, time is more than just a passing moment. It is a bridge between generations. The area has seen a great shift from the older generations holding on to their traditions to the youth challenging these ideas. Muttoncherry's various communities maintain a balance to create a harmonious lifestyle for coming generations. Mutton cherry comes from the word mutton meaning gift and cherry meaning clusters. It refers to land gifted by the king of Kochi to communities looking for a new place to settle. Mutton cherry is considered a mini India for it is home to over 40 different communities from different corners of India. We aim to understand what drew people across the country to mutton cherry, why they settled in this area, and how it influenced their culture. We interviewed people from various demographics across communities and ages, namely the Tamil Brahmin, Gujarati, and Konkani, to understand how their traditions and values remain alive. I am the Ramesh Kalyanji Khona, born and brought up, born native place Kutch, Gujarat, brought up Kerala, Kochi. I am Jain, Kutchi Jain, we say. मेरा नाम भुवना है मैं 28 साल से हूँ ललिता रामलिंगम 78. मेरा नाम रितेश आरपे है। मैं प्रसन्न में सीखता हूँ। यहाँ से शादी करके बॉम्बे गए मैं त्रिवेंद्रम तो त्रिवेंद्रम का अच्छा शादी करके इधर आया. अच्छा अभी में हो गए 40 साल उधर. 17 years I will be here. When it comes to the residents of Muttoncherry, a stark difference can be noticed between the lifestyle of the older and the younger generations. हाँ, एक 7 बजे उठता हूँ और मुझे 9 बजे स्कूल जाना है। स्कूल जाता हूँ 9 बजे। ये रंगोली जो है वो डालने का रंगोली डाल के फिर नहा लेने का नहाने के बाद ही हम खाना बनाते 4:30 में स्कूल से आता हूँ और फिर एक ब्रेक लेता हूँ। फिर से ट्यूशन ट्यूशन और एक 6:30 होते ही ट्यूशन है। तो सारा बनाते हैं भगवान का पूजा भी करते हैं कुछ टाइम पास करता हूँ इंस्टाग्राम फिर सब। There are over 40 different communities in Muttoncherry, and each had their own reason for choosing to settle in this region. This due to Portuguese invasion here in Goa. We left them there and came here. My father, my grandfather, my senior parents and all came here for the business and commercial purpose, for job. Now it is everything collapsed. For the younger generation, Kochi is now their home and they do not wish to leave that behind. However, the older generation always wonders, what if I went back home? सोच रहे 2 बार जाके आया ना. I am now 63. I am with the stick. Sorry, sir. आज जोडीने मला पाठवून मोकळी नको होती. Tried to get my town in last journey, but it's not happened. What to do? फ्रेंड्स इधर है तो इधर ही मजा आता है इतना गुजरात में। गुजरात में फ्रेंड्स होते तो गुजरात में मजा आता है. इधर है तो इधर मजा आ रहा है. Of course, I will move out because I don't see much opportunity in the city as we all grew and we do move for jobs. But I hope I do all my traditions and I follow all my rituals wherever I go because I like to be like that. While recent generations feel the need to keep up with innovation, the younger residents of Muttoncherry enjoy holding on to their family traditions. We have a function in our temple called Chasapati, and it's for that function everyone who's been not in the city comes here. And when you see on that 3 days, you won't find a single tiny place over here because it will be full loaded with people, and every house may have 2 5 peoples over there, and it's been like a function of unity, and we all get together, and it's like more having fun with each other and try to get interacting with each other, and yeah, we will be counting days. How many days do we have to reach that function? And I don't know. Everyone will be so excited for that. As I told, they will be booking tickets 3 months before the function. They will be booking rooms over here and decide what to wear because no one will be sitting at home. We all will be at temple 24 hours.
एक पूजा होता है जो एवरी ईयर होता है एंड इट इज़ डन बाय द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली. उसमें 5 टाइप्स के प्रसाद होते हैं. 6th वन होता है जो सब कुछ मिक्स करके बनाते हैं और अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो हम वो गौ माता को देते हैं. While each community in Mattancherry maintains its individuality, living in Kerala has had an influence on their customs and traditions. Onam is not our festival, but we celebrate that also because we are staying here. That came into our culture. हम टाइम पे वेकेशन होता है, खेलते हैं. सब ट्रेडिशनल इधर है. वो मलयाली का मुंड पहनते हैं हम लोग. मुंडे वो सारी जो है आप वो तिरुवादिरा के लिए होता है, काईकुट्टी के लिए वो सब करता है. स्पोर्ट्स में सब कुछ करता है. ओनम में स्पेशल फूड होता है विच इज कॉल्ड सद्या. इट्स राइस, लॉट ऑफ वेजिटेबल, सांबर. तो वो ट्रेडिशनल सद्या, ओना सद्या बोलता है ना, वो परफेक्ट बनाता है. बाहर ऑर्डर देता है तो हम लोग उधर शेड बनाता है, सब साथ में बैठ के खाता है. विशु होता है, वो सुबह 4 बजे उठ के ना भगवान को देख बनकर आन बंद करते देखो, पूरा वो कृष्ण भगवान के सामने सब रखता है. फूल, फ्रूट्स, पैसा, सोना, वेजिटेबल सब सब सटे भगवान के सामने. क्योंकि सुबह 3 बजे उठ के ऑन बंद करके सबको लेके आने का. फिर आवार बार देखो तभी मिरर में भी हम लोग को फेस दिखेगा, ये पूरा चामन मिरर में भी दिखेगा. So that comes in our culture. Actually, it is not our culture to celebrate Onam and all. So we are also celebrating. While the younger generation has been raised with such traditions, they never understood their reasoning, thus developing simply a surface level understanding of them. They are hence prone to questioning their customs and traditions in order to fill in the gaps. Elders are people with experience more than us, like triple experience. So they will have experience and they have seen through what we are going to do. So they'll guide us and some people feel that नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा. और वो जो बड़े बोलते हैं उनको बोलते हैं आप चुपचाप रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है. फिर एट लास्ट they'll end up falling down. तो पुराना लोगों को साइंस के बारे में बात करते तो वो तो उसको नहीं साइंस नहीं जानते थे. पुराना लोग ने क्या किया है, वो तो उसने कल्चरली कनेक्ट किया है. वो दोनों कल्चरली स्पिरिचुअली कनेक्ट करके वो बात किया है. वो तो उसी टाइम का लोग एक्सेप्ट कर गया. न्यू जनरेशन ऑल्सो एक्सेप्टेड size, but they are simultaneously they are accepting the old one also, spiritually and socially related one also, and they are accepting the science also. Maybe my generation is not much. We want every clarification before we do one thing, and we know what we are doing and everything. So, yeah. I ask her, do you ask them? Do you ask your grandmother? I don't do that because I've been used to do what I've been said. So I guess she have never asked such questions. वो रीजन है, उन लोग को मालूम था, बुरा बड़े लोग को. हम लोग कुछ पूछा नहीं, वो लोग बताया नहीं, सो मालूम नहीं था. अभी वो सब पढ़ने के लिए अच्छा है, सबके लिए रीजन होता है, सब अच्छा के लिए करता है. तो बच्चे लोग को मालूम होना चाहिए, इसके लिए पूछते हैं. आप अभी भी सीखो. If you ask my mom, she will be like get irritated if I ask so much questions. But if you ask my grandmother, she will be very happy to explain everything. Once I ask anything about the ancient things, the old time, she will be starting from the point and she will like explain everything. But जब पूछते हैं तो अच्छा है. so I always have been to my grandma about asking such things, and she knows pretty well about some things, about all things. Yeah. लोग क्या ऐसा ऐसा इधर इंडिया नहीं करता था गणपति के सामने. हम लोग को रीज़न नहीं है, वो लोग करते हैं इसलिए मैं भी करती थी. उसके लिए कितना साइंटिफिक रीज़न है. अभी बच्चे लोग बोले तो बोल सकता है ना हम लोग को. अभी इसमें करता है उसके लिए भी रीज़न है, कान नहीं करता, सबके लिए रीज़न है. वो नर्व्स जाता है, वो नर्व्स बुद्धि से कनेक्ट होता है, उससे कुछ वो सब अच्छा है ना. बच्चे लोग भी पूछते हैं तो हम लोग को मालूम होता है. नहीं तो क्या मेरी मम्मी ने लगाई, मैं लगाया. नो करेक्ट. New generations have changed in the manner of how they approach their culture. They inspect dogma under a microscope in order to bridge the gap between heritage and innovation. While their future is unpredictable, everyone has advice for them. अभी टाइम है, सुधर जाओ. man. My praise to the new generation society. You do better and best and the good for the self
and that community and the socially and the national one person. Whatever you do, go back to your roots, follow your traditions, and be with your loved ones. That's what the end of what you will be holding forever. Do what you feel and never get carried away by anything. Yeah, stay happy. आप लोगों को कैसा लगा केरल?